हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक कवर कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसके पहले भी अपन ने टॉपिक कवर किए मिनिमम 7 to 8 टॉपिक्स। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, तो जिन्होंने अभी तक पहले के वीडियोस नहीं देखे वो भी वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the default file extension of the document created in MS Word 2069 later? देखो ऑप्शन है .doc, .docx, .txt, .pdf। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे .docx। नेक्स्ट सेकंड, which shortcut key is used to save document in MS Word? देखो ऑप्शन है Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+V एंड Ctrl+O। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे Ctrl+S। Next, third, which of the following is not a type of text alignment in MS Word? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई, डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल अलाइनमेंट नहीं होती है, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई रहती है। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन MS Word? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टू फाइंड एंड रिप्लेस इनकरेक्ट वर्ड ऑटोमेटिकली। Second, to find and delete unnecessary word. Third, to highlight the word in different color. And fourth, to copy text from one location to another. यहाँ पे correct answer है first, to find and replace incorrect word automatically. Next, fifth, which key combination is used to apply bold formatting to selected text? देखो ऑप्शन है Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U and Ctrl+P। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट Ctrl+B। Next, sixth, what is the purpose of format painter tool in MS Word? तो देखो ऑप्शन है to change the font of selected text. Second, to copy formatting of one part of the document to another. Third, to insert picture in document. And fourth, to save a document in another format. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, to copy formatting from one part of document to another. Next, second, which features in MS Word automatically move text to the next line when it reaches to the right margin? तो एक ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग, वर्ड रैप, जस्टिफिकेशन, इंडेंटेशन। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, वर्ड रैप। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन MS Word 2006? तो देखो ऑप्शन है एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री एंड वर्डिंग। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, कैलिब्री। Next, 9th, which tab contain the table option in MS Word? देखो ऑप्शन है इंसर्ट, होम, लेआउट, व्यू। करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंसर्ट। नेक्स्ट 10th, what does Ctrl+Z shortcut do in MS Word? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे सेव द डॉक्यूमेंट, undo the last action, or redo the last undone action and open new document। तो यहाँ पे आंसर है सेकंड, undo the last action। नेक्स्ट 11th, which features allows you to apply predefined style to text? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग, थीम्स, स्टाइल, टेक्स्ट इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, स्टाइल्स। नेक्स्ट 12th, which tab allows you to add page number to the document? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट, होम, लेआउट, रेफरेंस। तो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट, इंसर्ट। नेक्स्ट 13, विच फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट विथ बुलेट पॉइंट्स? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे नंबरिंग, बुलेट, इंडेंटेशन, स्पेसिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, बुलेट। नेक्स्ट 14, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+D। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट Ctrl+N। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेज ओरिएंटेशन इन MS Word? देखो ऑप्शन यहाँ पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्क्वायर, बोथ A and B आर करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर आता है स्क्वायर। स्क्वायर नहीं रहता लेकिन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप रहता है। नेक्स्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। तो देखिए 16 नंबर क्या है, विच फीचर्स हेल्प क्रिएट अ कंसिस्टेंट लुक फॉर हेडिंग, सब हेडिंग एंड बॉडी टेक्स्ट? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट, स्टाइल्स, थीम्स,
पेज बॉर्डर, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड स्टाइल्स। नेक्स्ट 17, विच ऑप्शन इज यूज टू ब्रेक अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन। देखो ऑप्शन यहाँ पे पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट 18, विच टैब अलाउज यू टू अप्लाई अ वाटरमार्क टू अ डॉक्यूमेंट। देखो ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, होम, करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड डिजाइन। नेक्स्ट 19, हाउ कैन यू इंसर्ट अ हेडर इन MS वर्ड। एक ऑप्शन है यहाँ पे गो टू इंसर्ट और हेडर, सेकंड गो टू लेआउट और हेडर, थर्ड गो टू व्यू और हेडर, एंड फोर्थ गो टू फाइल और हेडर। तो आंसर है यहाँ पे गो टू इंसर्ट एंड हेडर फर्स्ट। नेक्स्ट 20, विच टैब इन MS वर्ड कंटेन द ऑप्शन टू ट्रैक चेंजेस। देखो ऑप्शन है यहाँ पे होम, रिव्यू, इंसर्ट, व्यू, करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड रिव्यू। Next 21, which tool allows you to check spelling and grammar। तो देखो ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑटो करेक्ट, वर्ड काउंट, ट्रांसलेट, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट 22, which features is used to merge multiple document into one। देखो ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज डॉक्यूमेंट, कंबाइन, मेल मर्ज, डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, करेक्ट आंसर है आपके सेकंड कंबाइन। Next 23, which view is used for reading document without restriction। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट लेआउट, रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड रीड मोड। नेक्स्ट 24, which ऑप्शन अलाउ यू टू चेंज द पेज बैकग्राउंड कलर। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे पेज लेआउट, देन पेज कलर, होम, पेज कलर, इंसर्ट, पेज कलर एंड व्यू पेज कलर, तो करेक्ट आंसर है आपके फर्स्ट पेज लेआउट एंड पेज कलर। नेक्स्ट 25, विच फीचर इज यूज टू सेंड पर्सनलाइज लेटर टू मल्टीपल रिसिपेंट्स। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, मेल मर्ज, फॉर्मेट पेंटर, पेज लेआउट, तो करेक्ट आंसर है आपके सेकंड मेल मर्ज। नेक्स्ट 26, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फुटनोट्स इन MS वर्ड। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन एट द बॉटम ऑफ पेज, सेकंड टू चेंज द पेज नंबर फॉर्मेट, थर्ड टू इंसर्ट सिचुएशन, एंड फोर्थ टू ऐड पेज ब्रेक, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन एट बॉटम ऑफ द पेज। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन इन MS वर्ड। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इनसाइड टेक्स्ट, यहाँ पे है इनसाइड टेक्स्ट। नेक्स्ट 28, विच फीचर्स अलाउज यू टू इंसर्ट प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट लेआउट। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे थीम, टेम्पलेट्स, पेज लेआउट, स्टाइल, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड टेम्पलेट। नेक्स्ट 29, विच ऑप्शंस अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेट इन अ डॉक्यूमेंट। देखो ऑप्शन है डेट एंड टाइम, थर्ड ऑटो टेक्स्ट, सेकंड क्विक पार्ट, एंड थर्ड इंसर्ट टेबल, तो करेक्ट आंसर है आपके फर्स्ट डेट एंड टाइम। नेक्स्ट 30, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल W, कंट्रोल प्लस Q, देन कंट्रोल प्लस X एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, तो आंसर है यहाँ पे कंट्रोल प्लस W। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। नेक्स्ट है 31, विच फीचर्स इन MS वर्ड अलाउज यूजर टू क्रिएट एन इंडेक्स फॉर डॉक्यूमेंट। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फुटनोट, रेफरेंस, टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा इंडेक्स। नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। तो देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, आंसर आएगा स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट 33, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो एक ऑप्शन है कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस W, आंसर है फर्स्ट कंट्रोल प्लस N। नेक्स्ट 34, व्हाट इज द मैक्सिमम 0% अलाउड इन MS वर्ड। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 200%, 400%, 500%, 600%, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लास्ट 600। नेक्स्ट 35, विच फीचर्स अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल सेल्स इन अ टेबल।
तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, फॉर्मेट सेल, अलाइन सेल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मर्ज। नेक्स्ट 36, which tool help user change the text of case of text that is upper case or lower case। तो देखो इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉन्ट इफेक्ट, चेंज केस, फॉर्मेट पेंटर, वर्ड आर्ट। इसको बोलते हैं अपन सेकंड चेंज केस। नेक्स्ट 37, which tab in MS Word provide option for adjusting margin। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे होम, इंसर्ट, लेआउट, प्रीव्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड लेआउट। Next 38, which keyboard shortcut is used to apply underline formatting। तो देखो ऑप्शन है Ctrl+I, Ctrl+B, Ctrl+U एंड Ctrl+L। तो करेक्ट आंसर है थर्ड Ctrl+U। नेक्स्ट 39, which features in MS Word is used to insert a citation in a research paper। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फुटनोट, हेडर, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड बिब्लियोग्राफी। Next 40, what is the function of hyphenation features in MS Word। देखो ऑप्शन है to align text properly, second to split word across line, third to insert hyphens manually and fourth to add bullet points। तो करेक्ट आंसर है आपके सेकंड to split word across lines। Next 41, which MS Word view is best for rearranging document structure। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट लेआउट, रीड मोड, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट 42, which features allows you to prevent other from making changes to a document। देखो ऑप्शन है यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन, रीड ओनली मोड, थर्ड ट्रैक चेंजेस एंड फोर्थ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। नेक्स्ट 43, which shortcut key is used to redo the last action in MS Word। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+R, Ctrl+X। आंसर है सेकंड Ctrl+Y। नेक्स्ट 44, which features in MS Word allows user to create multi-column document layout। देखो ऑप्शन है यहाँ पे पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, कॉलम्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ कॉलम्स। नेक्स्ट 45, what is the purpose of word count in MS Word। देखो ऑप्शन है यहाँ पे to count word and character in the document, second to find the most frequently used word, third to insert word suggestion and fourth to replace word automatically। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट to count word and character in the document। Next 46, which of the following element can be inserted using the insert tab। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे टेबल, इमेज, शेप। तो सभी आता है इंसर्ट में, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 47, which features is used to automatically complete frequently used word or phrases। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट, ऑटो कंप्लीट, स्मार्ट आर्ट, ऑटो करेक्ट। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ऑटो टेक्स्ट। नेक्स्ट 48, which features is used to apply different header style on odd even pages। देखो ऑप्शन है यहाँ पे कस्टम हेडर, सेकंड डिफरेंट फर्स्ट पेजेस, थर्ड डिफरेंट ऑड इवन पेजेस एंड पेज लेआउट। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड डिफरेंट ऑड इवन पेजेस। नेक्स्ट 49, which file type is used to save document as a template in MS Word। तो देखो ऑप्शन है .docx, .dotx, .txt, .pdf। तो करेक्ट आंसर है सेकंड .dotx। नेक्स्ट 50, which tab allows user to change the background color and page border। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, व्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड डिजाइन। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर, पीएनबीएसओ क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर, महाट्रांसफर एलडीसी का अकाउंट्स के टॉपिक्स कवर करेंगे, पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ का मॉक पेपर, आईडीबी असिस्टेंट, बैंक अप, ये सभी मॉक पेपर अपन सॉल्व करेंगे। प्लस स्टैटिक जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस के डेली क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन टू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।